file it. I can't force you. मैं करता हूं सर, इनका जवाब भी मुझे इलेक्शन खत्म हो जाएंगे फिर आप सर आपका सिर्फ कंप्लायंस रिपोर्ट में खोसा साहब पेज ये दिसंबर 26 का लेटर है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को लिखा है, इनको दिखाएं खोसा साहब को। इसमें पैराग्राफ 4 के अंदर लिखा है दैट आफ्टर द मीटिंग द डेलीगेशन ऑफ PTI The Commission taking immediately notice has issued instructions। ये मोटी वाली किताब में पेज, इसका पेज नहीं है, तीसरे नंबर पे ये पेज नंबर नहीं डाले। Commissioner Islamabad and all the 4 provincial chief secretaries, inspectors general of police and all the 4 provincial election commission. In turn, the provincial election commissioners have issued the instructions to the DROs and ROs. Copies are annexed E to E24. Further, all such complaints are being proactively handled by the complaint cell at the highest level. ये election commission ने कहा है। ठीक है, ये ठीक है। और पेज मैंने अगर ये कहा है उन्होंने तो कंटेम्प्ट भी तो आपने उन्हीं के खिलाफ लगाई है, कहा उन्होंने, और पेज कर दी उन्होंने। मैंने अपनी जो पिटीशन क्रिमिनल ओरिजिनल लगाई है उसके पेज 14 से ऑनवर्ड्स मैंने लगाई है इनकी इंस्ट्रक्शन जो इन्होंने नीचे भेजी प्रोविंसेस में भेजी। ठीक है सर, अब ये प्रोविंशियल इसीलिए मैं पेज 12 पे पढ़ रहा था। ये 132 से शुरू हो रहा है इसी पेपर बुक में जो इन्होंने अभी दी है ना कोर्ट में, इसमें सारे इंस्ट्रक्शंस इशूड हुई हुई ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं यही अर्ज कर रहा था इट वाज नॉट जस्ट मेंट टू एज अ रिचुअल के आप भेज दें, उस पे आपने कानून के मुताबिक 184, 185, 186 अगर कोई ऑब्स्ट्रक्ट करता है इंस्पेक्टर जनरल पुलिस या चीफ सेक्रेटरी हमारे कैंडिडेट्स को उठा लेते हैं, पुलिस बाहर कार्डन ऑफ करके रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिसर्स को ब्लॉक कर देती है, कैंडिडेट्स को अंदर नहीं जाया जाए। शिकायतें तो चीफ इलेक्शन कमीशन को होगी ना। पे पढ़े, यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ। ये प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर क्या लिख रहा है, वो कहता है कि ये फ्लड ऑफ कंप्लेंट्स आई हुई हैं, आप इसका क्या तदारक करें। तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक खामोश तमाशाई की तरह सिर्फ अपनी जिम्मेवारियों से जो है मुबर्रा हो गया कि एक लेटर लिख कर कि जी इस तरह ये करें। अब ये देखें पेज 12 पे जरा काइंडली रीड, बेयर विद मी, इसको जरा देख लीजिएगा, आपको पैटर्न पता चल जाएगा पाकिस्तान सारे में क्या हुआ। विद ग्रेट कंसर्न, अब ये लिख रहा है प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर लिख रहा है, with great concern I had the honor to state to bring I don't know why you're not focusing on the matter. You have brought a contempt application before us under Article 204. We are not hearing the case. All we have to do at this stage is to see if our order has been complied with or not. That is the scope. Please do not expand the scope of this matter. This matter is restricted as per your own filing, Article 204. It's a contempt matter. Pursuant to the order dated 22nd of December 2023, the Election Commission, we wanted to see if they've done something. They have immediately on 26th of December, after 4 days, within 4 days, have filed this huge compliance report. Now if you are saying, नहीं देखी इसको या मुझे कॉपी नहीं मिली है, तो अब आप देखिए ना, ये तो कोई इसको कल रख लें बेशक सर, आप प्लीज ठहरें, मुझे नहीं मिली है ये। आप जरा बात समझने की कोशिश तो करें ना। अब आपको मिल गई, अब आप पढ़ लीजिए। अब ये हम रोजाना देखिए, रोजाना आपका एक केस तो नहीं हम चलाएंगे कि पूरे सुप्रीम कोर्ट में हम फिर ऐसा करें कि दिस सुप्रीम कोर्ट शुड नॉट डू नो अदर वर्क बट दिस। ये 200 सफे में यहाँ खड़ा होकर तो आपका टाइम जाया नहीं करूंगा। नहीं करें साहब, अब इतना क्या और कर लें, कोई फर्क नहीं, हम रात तक बैठ सकते हैं आपके लिए, मगर रोजाना नहीं बैठेंगे। आप एक ये सफा तो पढ़ नहीं रहे हैं, अब ये तो जरा प्लीज पढ़ लीजिएगा। कौन सा सफा भाई, आप बात समझने की कोशिश करें ना। अब आप ऑर्डर की कंटेम्प्ट में आए हैं। क्या ऑर्डर से पहले बातें और इरेलेवेंट बातें नहीं। अब आप देखें, हम इनसे सवाल पूछेंगे आपने ऑर्डर पे अमल किया है, इन्होंने क्या किया है। हो सकता है गलत कह रहे हो, मगर इतनी बड़ी उन्होंने कंप्लायंस रिपोर्ट फाइल कर दी है, लिख करके उन्होंने सारे इंस्ट्रक्शंस अपने DROs, ROs सबको इशू कर दिए हैं। अब उसमें कोई खामी दिखाएं तो बात समझ आती है। ये अखाड़ा नहीं है क्या, किसकी आवाज भारी है। आप बात कर लें, हम खुश चुपचाप सुनेंगे, फिर हम जरा जुमले कंप्लीट कर लें। आप
बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ. नहीं तो फिर आप हमें बोलने देना. चलिए बोलें. पहला पॉइंट ये आप नोट कर लीजिए, इसका जवाब दे दीजिए, फिर हम दूसरे पॉइंट पे आ जाएंगे. पहला पॉइंट अब आपको हमने समझा दिया. दूसरा पॉइंट ये है कि आपने तो कंटेम्प्ट किसके खिलाफ मांग रहे हैं? आप आईजी और चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ मांग रहे हैं. उनका क्या लेना देना है इलेक्शन से? इन दो बातों का जवाब दे दीजिए बस. अर्ज करूं, ये जो आपने ऑर्डर किया था, ठीक है, उस पर उन्होंने बिल्कुल सुना. हमें सुनने के बाद उन्होंने जो है ये प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर्स को और बाकी को लेटर्स लिख के, अब प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर उसके जवाब में क्या लिख रहा है ये जरा पढ़ने की तो मेहरबानी कर लीजिएगा. आपकी तो बात मैंने इतनी सुनी, ये भी जरा पढ़ लीजिए प्लीज. With great concern, I have the honor to state to bring to your kind notice that this office is flooding with numerous kind of applications. जरा आप डेट नहीं पढ़ रहे हैं उसकी. 24 दिसंबर है. कंप्लायंस रिपोर्ट की डेट पढ़िए. 24, ये वही तो इन्होंने उसी दिन. नहीं आप पढ़िए ना प्लीज डेट. ये आप पढ़ेंगे नहीं अगर आप डेट पढ़ लें. उसकी है 26 दिसंबर. तो भाई इस आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उस पे उन्होंने हुक्म जारी कर दिए हैं 26 को, तो उससे पहले वाली बात पढ़ने का कोई मकसद नहीं होगा ना. उसके बाद की भी मैंने इसके 26 के बाद की कोई बात बताएं. 22 का ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का, 26 पे इन्होंने कंप्लायंस कर दी उसकी. ठीक है, अब इसके बाद कुछ उन्होंने गलत चीजें की हैं तो बता दीजिए. मैं आपको सीडी भी चला के जरा देख लीजिएगा. और जो कुछ आपने भी मीडिया पे सारी दुनिया ने देखा है कि जिस तो मैं तो मीडिया देखता नहीं हूँ. चलें, अच्छा करते हैं आप. इट्स सिकनिंग अदरवाइज. लेकिन सर गुजारिश ये है कि इन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर्स को ब्लॉक किया हुआ था. वहाँ हैवी कंटिंजेंट ऑफ पुलिस खड़ी हुई थी. वो पूछते थे आप किसके हो, तो जब पीटीआई का पता चलता था तो वो कैंडिडेट को भी उठा लेते थे, प्रपोजर और सेकेंडर को भी उठा लेते थे, डेजिग्नेटेड ऑफिसर को भी उठा लेते थे. यहाँ भी यही जो कंप्लेंट्स की हैं उससे पहले भी हो रही थी, इनके 26 के बाद भी यही हुआ. ये बातें तो आपने लिखी भी नहीं है. लिखी है. कहाँ लिखी है? ये जो मैंने सीएमए दी है ही नहीं, लिखी नहीं कहीं आपने. सर सब आप ऐसी बातें तो ना करें जो आप लिख भी नहीं रहे. नहीं, क्रिमिनल ओरिजिनल में देखिए जरा, लिखा यही है. और क्या किस चीज की क्रिमिनल ओरिजिनल कर रहा हूँ ये जरा मुलायजा कीजिए मेरे ग्राउंड्स. उन्होंने यहीं से किया, ये देखिए. दैट डिस्पाइट, ये पेज कहाँ से पढ़ने? ये पेज 3. The petitioner is filing the instant contempt petition under the following grounds. यहाँ grounds मैंने लिखे पेज 3 के last paragraph. That despite the clear and unambiguous directions of this court in the order dated 22nd December 23, respondent number 2, that is the Election Commission of Pakistan, have failed to implement the clear and unambiguous order of this court. The failure of respondent number 2 to address the grievances of PTI is unconstitutional, unprecedented. तो अंग्रेजी है, ये उन्होंने कंप्लायंस कर दी है. ये देखिए, ये उन्होंने फाइल कर दिया इतना बड़ा डॉक्यूमेंट. सर ये रिचुअल नहीं था कि सिर्फ आपने एक कॉस्मेटिक जो है कंप्लायंस करनी है. आपकी जुरिस्डिक्शन, आप यहाँ एज अ गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, आपने इंश्योर करना है दैट द इलेक्शंस आर फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट, जो आपने डायरेक्शन दी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को. और ये आपने क्या किया जी? सर मैं थोड़ा सा अर्ज कर रहा हूँ. हमने अभी एक और सप्लीमेंट्री रिपोर्ट भी दाखिल कर रहे हैं. इसे सो मच सो इनकी एक समरी हम दाखिल कर रहे हैं कि जितने हमारे पास डायरेक्ट भी इनकी ग्रीवेंस आए हैं कि यार इनकी नॉमिनेशन पेपर्स ले ले या इनकी ग्रीवेंस, तो देयर इज अ समरी एंड देयर इज अ कंप्लीट रिकॉर्ड. वी हैव टेकन एवरी स्टेप्स टू इंश्योर दैट देयर नॉमिनेशन पेपर्स आर एक्सेप्टेड एंड द आरओ हैज कंफर्म्ड. द समरी से सो. खोल के देखिए क्या चीज है. ये समरी लगी है सर. नहीं तो आपको नंबर नहीं पता आपको कितने एक्सेप्ट हुए और कितने रिजेक्ट हुए? सर वो अभी once the RO finalizes these जो वाइस पे हमने लगाई हुई है, जनाब हमने लेटर भेजा. ये पार्टी वाइज नहीं है सर. देयर इज अ जनरल स्टेटमेंट, क्योंकि पार्टी वाइज तब पता चलता है व्हेन देयर इज अ पार्टी टिकट एंड पार्टी सिंबल्स. सिर्फ यहाँ जमा करा के रिपोर्ट की है. हम नहीं, इस पे कंप्लायंस पे आप क्या कहना चाह रहे थे कि आप Compliance में सर इंश्योर करेंगे कि सारे फॉर्म जो हैं वो एक्सेप्ट हों? सर वी डिड इंश्योर. ये अगर समरी है तो ये थोड़ा सब्र करें.
कंप्लायंस वही है जो हमने लेटर लगाए हैं। कंप्लायंस रिपोर्ट वही है जो हमने लेटर्स लगाए हैं। नो सर, मैं आई रीड इट सर, ये समरी जो ऊपर लगी और अंदर इसके नेक्स्चर्स हैं, इसमें एक इनका कंप्लेंट आया था कि RO-90 confirmed that the nomination papers of the applicant as well as his daughters have been submitted and he received it. There was a grievance that they are not going to accept it. The summary ये समरी लगेगी। रिटर्निंग ऑफिसर तक पहुंचने देंगे तो तब है ना, रिटर्निंग ऑफिसर से आप रिपोर्टें मांग रहे हैं। खड़ा हो सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन खड़ा हो जाए उनको। क्यों नहीं? इलेक्शन कमीशन, we did issue direction to each and every corner. आप आईजी को रिमूव कर सकते हैं अगर पुलिस वो हाई हैंडेडनेस करता है, आप क्यों नहीं कर सकते? इलेक्शन कमीशन के ताबे इस वक्त सारी चीजें, मशीनरी जो है, दे हैव टू स्टैंड विद यू। They can't block the returning officers and pick the candidates or their returning officers or their proposers and seconders. Then that is not a contempt under section article 204 with regard to the. The Supreme Court is sitting as the guardian of the fundamental rights. Even Article 187 is annulled. I don't have to write any sections for invoking the jurisdiction of this court. Sections are irrelevant. Here the very state is at stake if the elections are not held freely and ये fairly. जो समरी है तो 31 लोगों के लिए ना, 31 फॉर्म। सर जितने भी आए थे सर उनको हमारे पास ये आए थे उनको डिस्पोज ऑफ किया सर। जितने भी साथ साथ आते रहे द कमीशन टुक स्टेप्स एंड फॉरवर्डेड इट अकॉर्डिंगली। एक आदमी राजनपुर, रुझान और बक्खर और सक्खर से तो नहीं आ सकता यहाँ इलेक्शन कमीशन के पास, वो तो वहीं करेगा मुकामी तौर पर। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर, प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर, मैं वही लेटर आपको प्रोविंशियल इलेक्शन, और इन्होंने जो अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट में लिखा है, इन्होंने वही लिखा है कि वो लेटर। आपकी पूरी कंटेम्प्ट एप्लीकेशन पढ़ ली है, उसमें आपने कोई एक स्पेसिफिक एलिगेशन भी नहीं लगाया है। आपने बस जनरल बातें की हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, वी कंप्लीटली एग्री विद दिस, वी 100% एंडोर्स इट। यू हैव नॉट मेड एनी एलिगेशन। I mean, what are we doing here? Sending people for contempt? You have just made, yes. This court has fixed the day, ensured the date for elections is taken fixed. This court is trying its utmost not to disrupt the election process. But where is there any specific allegation? Make a specific allegation. All it is, it's just general words. The election commission is under a constitutional duty to conduct free and fair elections. Yes. Under Article 218, yes. That, sir, you just saying these general बातें कर रहे हैं, तो कोई specific बात हो तो हम उसको देख सकें. So where is anything specific? So what we can, unless you want us to substitute ourselves as the Election Commission of Pakistan, that we should hold the elections ourselves, वो भी हमने करके देख लिया कि जो फिर क्या हुआ था उस इलेक्शन में, जो आपने जो एलिगेशंस लगाए थे, एंड फिर हम सुप्रीम कोर्ट ने कितना वक्त ज़ाया किया, और फिर वो मालूम हुआ कि कोई भी सब्सटैंशिएटेड एलिगेशन नहीं थे। 35 पंचर वाली जो बात इसी कोर्ट में हुई थी, उसमें भी उन्होंने बहुत सारी बेज़ाब्तियों का अनफर्ल किया था, अगरचे और हर चीज मुस्तरद हुई, ऑर्गेनाइज्ड उन्होंने हर चीज मुस्तरद हुई, ऑर्गेनाइज्ड हर चीज मुस्तरद हुई। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड उन्होंने कहा नहीं है, लेकिन इरेगुलरिटीज उन्होंने 47 स्पेल आउट की थी, उसमें भी यही हुआ था आपकी इसी कोर्ट। भाई हम तो जजेस नहीं थे ना, मैं ये नहीं कह रहा। आप जो भी जजेस थे उस वक्त, उन्होंने ये डिटरमिन किया, आपने कोर्ट का बेतहाशा वक्त ज़ाया किया आपने, और कोर्ट ने आपके सारे एलिगेशन मुस्तरद कर दिए। कोई कंपैरिजन नहीं है उसका और इसका, कोई कंपैरिजन नहीं। आज जो कुछ हो रहा है इस पाकिस्तान में, आप देख लें जरा, ये खुद चीफ अपना इलेक्शन कमिश्नर ने स्पेल आउट किया है 12 पे, जो मैंने अर्ज किया। इलेक्शन कमिश्नर हमने तो नहीं अपॉइंट किया है ना, आप ही ने अपॉइंट किया है। मैंने नहीं किया ना। तो आप जो बातें आप देखिए, कोई पाकिस्तान में कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है, बस क्यों नहीं प्रोएक्टिव इलेक्शन होने नहीं दे रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है। इलेक्शन कमीशन और इनको
को, अथॉरिटीज को डायरेक्शन दे सकते हैं कि ये इससे ज्यादा डायरेक्शन हम क्या दे सकेंगे? 22 दिसंबर का ऑर्डर से सख्त ऑर्डर हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल ठीक है, और उस पे अगर इन्होंने हमें टाल मटोल की होती, we would have taken them to task। तो नहीं किया ना अमल। अब आप सुनते नहीं ना, तो हम आपको सुनते हैं, आप बात करते हैं खामोशी से। वो बात कर रहे थे, आप उनको भी बार बार मैं तो आपको ही सुने जा रहा हूँ, कब मैं बोल रहा हूँ। आप ही बस बोल ले, फिर आप बोल ले, फिर हम चुपचाप बैठते हैं पुराने स्टाइल में। वो 12 वो पेज पढ़ ले। Whenever you finish, you tell us। 12 पेज पढ़ ले। 12 पेज आप बात समझने की कोशिश करें। मैंने समझ लिया। 24th of December। This report is dated 26th of इन्होंने जो December। कंप्लायंस रिपोर्ट में रेफर किया ना, उसमें इन्हीं का रेफर किया है कि हमने कंटेम्प्ट पिटीशन में आपकी 2 पेज की प्रेयर है, आप प्रेयर पढ़ें, वो कंटेम्प्ट में आती हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि जलसों की इजाजत दें, रैलीज की इजाजत दें, यानी कंटेम्प्ट तो सिर्फ इस चीज की कंटेम्प्ट है कि ऑर्डर की नॉन कंप्लायंस। उस हद तक कोर्ट देख सकता है कि जी हमारे ऑर्डर को वायलेट किया है तो इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल टू फेस द कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स। अगर आप अपनी प्रेयर क्लॉज पढ़े ना पेज 6 से 7 पे, तो आप तो इसमें ये भी कह रहे हैं रिस्पोंडेंट नंबर 2 may kindly be directed to take against the culprits under section 55, 184, 186, 187 and 188 of the election act। जिन्होंने मेरे प्रपोजल्स को उठाया है, जिन्होंने मेरे सेकेंडर्स को उठाया तो सिर्फ उस ऑर्डर की हो रही है ना। हाँ, आप इसको नई पिटीशन के तौर पे आर्ग्यू कर रहे हैं, वो एक अलग चीज है। दिस इज नॉट ए फ्रेश पिटीशन, दिस इज ओनली द प्रोसीडिंग्स ऑफ कंटेम्प्ट which can be initiated against the alleged contender if you will make out the case of contempt। सर पैराफ्री ऑफ टाइम है शॉर्टन। माय लॉर्ड, आप चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये वी विल नॉट काउंटेनेंस एनी डिले इन द इलेक्शन। आई डोंट वांट टू बी प्रीवी टू दैट एट ऑल। आपने मेरे वकील को भी कंटेम्प्ट नोटिस दिया, सो आई कांट टेक दैट रिस्क ऑफ गोइंग टू द हाई कोर्ट बिकॉज आई डोंट वांट टू इन एनी मैनर व्हाटसोएवर आई डोंट वांट द डेफरमेंट ऑफ द इलेक्शन इवन फॉर अ मोमेंट। प्रेयर क्लॉज तो आपकी मेन जो पिटीशन जो यहाँ लगी होगी उससे भी बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दैट। सर इलेक्शन कमीशन ने उनके खिलाफ 2 पेज की सर आर्टिकल सेक्शन 184, 185, 186, 187 जो भी पकड़ता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है, उस लेवल प्लेइंग फील्ड को जो भी डिनाई करता है, उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है इलेक्शन कमीशन। व्हाई इज द इलेक्शन कमीशन स्लीपिंग ओवर इट एंड प्रीवी टू But you've not filed a single complaint। सर मैंने We are asking you repeatedly, show us your complaints that you filed before the election commission। मैंने जो Election commission will, if it doesn't entertain your complaint, it's a different matter। They have implemented our order। Now, if you have a complaint, you should show us, this was my complaint, this was left unattended। जरा सीडी देख लें फिर जो कुछ हो रहा है। फिर खोसा साहब, I think you should speak and I don't know, you don't let us talk at all। ये it's the other way around। मैं तो सर as a law, as an officer of this court, मेरी तो ये ट्रेड में ही नहीं है कि मैं किसी को obstruct करूं। नहीं, ये कंटेम्प्ट में कंप्लायंस होनी है ना, कंप्लायंस ही तो अब आप इनको अगर शिकायत करेंगे कोई, जो कि बार बार हम आपसे कह रहे हैं, बिकॉज हमारा तो ये कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग है, इसके अंदर हम बुला के किसी को कहें कि तुम कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग फेस करो, चार्ज फेस करें। लेवल प्लेइंग फील्ड दे दे, लेवल प्लेइंग फील्ड सारी दुनिया को नजर आ रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड आप नहीं दे रहे हैं इनको, बताइए। बिल्कुल दे रहे हैं सर, एक मिनट, एक दे रहे हैं सर 550 पूछ लेना उनसे, 1 मिनट बोलने दीजिए ना उनको। सर मैं सवाल किया है, जवाब तो देने दीजिए। सर विद योर परमिशन सर, ये जो अभी दोबारा रिपोर्ट दी है इसमें एज मनी एज 23 यहाँ हजारों की तादाद में हो रहा है। 30 complaints so far commission has received on record, and every complaint has been sent to the relevant quarter, even up to the level of the RO, to keep their offices open and accept the receive the nomination papers and decided according to law। There is an index sir, there is a summary and it is on the record sir। सर ये जो फरमा रहे हैं पैरा 3 मैं पढ़ देता हूँ। As you know that filing of nomination papers as per election schedule issued by the ECP is concluding today, while the receiving and filing of nomination papers is still marred by the incident of fear, intimidation, snatching of nomination papers and other CS such acts in the hands of the police. In this way the candidates are being discriminated against, as conducive environment is not being provided to all without any
discrimination, December 2023, and unhinderedly. But the discouraging aspect of the situation, as mentioned above, is so that the returning officers, who mostly are from provincial / federal executive, are not acting in a proactive manner as the electoral laws demand from them. They seem unable to control the situation even inside their office premises by making it conducive for all the prospective candidates to attend their offices unhinderedly, without from intimidation, any discrimination for receiving and filing of their nomination papers uninterruptedly. Para 4, as you also know that all the executive authorities are bound to assist the Election Commission of Pakistan in the conduct of elections in a fair, free and transparent manner as stipulated under Article 220 of the Road with Section 5 of the Elections Act 2017. But contrary to this, the concerned administrative authorities, including DRO, ROs and other functionaries working under the administrative control of the provincial government, are not rendering the requisite assistance as required of them under the quoted provision of law to provide, and hence is the clear violation of constitutional provision as well as of the provisions of electoral laws and instructions of ECP2. Foregoing in view, it is therefore requested kindly to intervene in the matter by issuing strict directions to all concerned under your administrative control to act proactively, effectively and promptly to provide a conducive environment at the premises of the RO's offices so as all the prospective candidates could file their nomination papers of ease without any hindrance, fear and intimidation. Besides, necessary direction may also be issued to all deputy commissioners and other administrative officers under your kind control to control the situation within the premises of their respective offices and take strict and stringent actions against any officials of any department who is intervening and impeding the nomination process, creating hurdles for the candidates in receiving and filing of their nomination papers. Your personal attention, intervention and your timely response in the matter to control the situation is requested, which shall be violated highly. अब इसमें जितने हमारे रिजेक्ट हुए हैं उसमें 90% हैं कि जी प्रपोजर सेकेंडर इनके हाजिर नहीं आए, कैंडिडेट हाजिर नहीं आए. अब ऐसे में जब आपने ब्लॉक किया हुआ है, पुलिस खड़ी की हुई है, जब पता करता है तो आप उठा लेते हैं और उनके खिलाफ 216 के उल्टा पर्चे दर्ज कर देते हैं. Even lawyers were incarcerated and the bars had to intervene at places. My own son was arrested. Forget, अच्छा नहीं लगता personal बात करना, but nevertheless, this is what is happening around. Can anybody shut his eyes? But this is the worst type of pre-poll rigging ever in the history of Pakistan which is taking place. अगर आप इस तरह से कहते हैं कि ये level playing field है, तो then why hold the elections at all? फिर अगर ये इस तरह से करना है कि ये की obstruct कर देना है और ये सारे एक किसी और पे क्या किया है जी? आपकी ये पेज 12 पे जो खत है आपके पंजाब के जो इलेक्शन कमीशन, provincial election commission. Sir, this strengthens the stance of the commission. The provincial election commissioner has issued direction to the chief secretary and inspector general of police to ensure level playing field and to. लेटर किधर है जो लिखा आपने? सर लेटर किधर है? ये ना सर, नहीं ये तो 12 तो ये तो प्रोविंशियल डायरेक्टर कमीशन इलेक्शन कमीशन पंजाब ने खत लिखा है ना. तो उसके बाद इसकी कंप्लायंस चीफ सेक्रेटरी साहब ने क्या करनी थी, उनको खत लिखा है ना कि आप देखें इस मैटर को, ये प्रॉब्लम जो है. तो 24 का लेटर 28 को हमारे किसी को नहीं जाने दिया गया. 90% रिजेक्ट हुए हैं कि आपका प्रपोजल सेकेंडर है. 29 को नहीं जाने दिया. 30 को तशद्दुद किया है. वो जरा देख ले सारे प्रोविंसेस में क्या हुआ है. ये 24 के बाद की ऑर्डर लेटर के बाद. सो देयरफॉर आई वाज सेइंग कॉस्मेटिक किस्म की जो है लेटर लिख देना काफी नहीं है. इलेक्शन कमीशन पंजाब ने जो खत लिखा है तो उसके ऊपर कोई कंप्लायंस की है चीफ सेक्रेटरी साहब ने? सर ये समरी जो लिखी है ये 24 इस पे है सर. 25 का एक लेटर है समरी के पेज 3 पे सर, ये ऊपर लगाया है. इसके कंप्लायंस पूछ रहे हैं. चीफ सेक्रेटरी ने कंप्लायंस की है, कोई उसमें कुछ इकदाम किए हैं? 24 दिसंबर के लेटर के जवाब आईजी को भी लिखा है, चीफ सेक्रेटरी को भी लिखा है. ये दो को लिखा है ना आईजी ने ना वहां से पुलिस हटाई, ना वहां से चीफ सेक्रेटरी ने एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को कोई हिदायत दी.
दोनों ने विद इम्प्यूनिटी उठा के तो जो है सारे अंदर कर दिया। क्योंकि इस लेटर की कॉपी तो आपको भी आई है ना सेक्रेटरी, उन्होंने मार्क की है ना इनक्लोजर के तौर पे, आपको भी मार्क की है ना सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये हम सर रिकॉर्ड से देख लेंगे, लेकिन इसमें नॉमिनेशन पेपर्स वर स्मूथली देन फाइल्ड, और इसका रिकॉर्ड है, हमने भी उनको भिजवाए हैं सर। ये समरी अगर आप देख लें 26 को भिजवाए हैं, 27 को भिजवाए हैं, 28 को भिजवाए हैं। इवन मतलब ये टिल लास्ट व्हेन एज एंड व्हेन देयर कंप्लेंट्स वर रिसीव्ड देयर इज समरी एंड देयर इज अ रिपोर्ट दैट एक्शन हैज बीन टेकन सर। ये तीसरा So your allegation is against whom? ये देखो सर Ji? सॉरी सर, Your allegation is against whom? my allegation is that the election commission Is of against whom? respondent number 2, respondent Give number the 4, name. respondent number 7. Give 2, the name. 4 and 7. Give the name, who are these? Yes. 2 is उमर हामिद खान, Sir Umar Hamid Khan, Secretary to the Election Commission. 4 is the Chief Secretary Punjab, and Umar 7 Hamid is Khan to is supporting you. 7 is the IG Punjab. Umar Hamid Khan is supporting you. very many letters. Sir, but He is supporting you. okay, fine, sir. मैं तो कहता हूँ proactively करें. It is not Umar Aslam Khan who is obstructing. It is the IG and the Chief Secretary who the subordinate staff, not even personally the IG or the Chief Secretary. That's it, okay. Just okay. So you only have problems with Punjab? नहीं सर, बाकी चीफ अभी तक सेक्रेटरी जो आपने खत बताया है वो तो ये आप देखिए आए जो एविडेंस पंजाब की है, ठीक कह रहे हैं आप, एविडेंस मेरे पास पंजाब की है, फिर आप बोलने बाकियों की मेरे पास और एविडेंस। बाकी इलेक्शन कमीशन की जहाँ तक नॉन कंप्लायंस है वो तो आप खुद कह रहे हैं कि वो खुद खत लिख रहे हैं, उन्होंने किया है, हमें टाइम तक बुलाया है, 3 बजे हमारी हियरिंग भी ये की ठीक कह रहे हैं है, आप। उन्होंने खतूत भी जारी कर आप दिए, ठीक कह रहे हैं। कंप्लायंस भी कर दी। सर आप ठीक कह रहे ठीक है ना, अब रह गया आपका ये पंजाब का, बिकॉज इन ड्यूरिंग कोर्स ऑफ योर आर्ग्यूमेंट यू ओनली पॉइंटेड आउट ओनली दिस लेटर पेज 12, वो आपने रिपीटेडली बताया कि पंजाब में ये हुआ है, तो अब पंजाब के एडवोकेट जनरल है जी कोई मौजूद इसमें? सर मेरा सिर्फ सबमिशन ये है, माय लॉर्ड द चीफ जस्टिस इज राइट, मेरा सबमिशन ये है कि ये सिर्फ रिचुअल से आप एक लेटर लिख देने से काम नहीं बनेगा। यू हैव डायरेक्टेड द इलेक्शन कमीशन टू एंश्योर ऑल दिस हैपेंस डजंट हैपन व्हाट इज हैपनिंग इन पंजाब। ये अब आईजी को अगर फ्री हैंड मिल जाता है, चीफ सेक्रेटरी अगर डिफाइंस करता है, देयर आर प्रोविजंस इन द लॉ इटसेल्फ वेयर बाय द आईजी एंड द चीफ सेक्रेटरी कैन बी टेकन टू टास्क बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। दे शुड बी रादर टेकन टू टास्क बिकॉज the entire edifice of the state depends on that. भी नहीं है। Did you move an application before the ECP to do so? Yes sir. इसमें मैं सिर्फ एक गुजारिश करूँ सर, मैं उस दिन आर्गूमेंट्स हमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भेजा था। Move an application to the Election Commission of Pakistan to take action against the IG or Chief Secretary of Punjab. सर वो तो प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर ने लिखा है, मुझे लिखने की क्या जरूरत है, वो तो खुद लिख रहा है प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर। They have not reverted. आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब ही नहीं देते हैं, क्या करें हम? थर्ड टाइम मैं सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं लिखा, हमने नहीं लिखा। तो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इलेक्शन कमीशन खुद ले रहा है, प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर लिख रहा है कि दे फ्लडिंग कंप्लेंट। देखिए जब ये 12 तारीख का खत आपको भी आया है चीफ इलेक्शन कमीशन को पंजाब की तरफ से, तो इसके कंप्लायंस आपको भी देखना चाहिए, आप अपने लेवल पे देखना चाहिए था आपको कि अगर चीफ सेक्रेटरी को खत लिखा, आईजी को लिखा, वो अपने तौर पे टेकअप करते कि भाई ये क्या मामला है, ऐसा क्यों हो रहा है। मीटिंग्स हुई, आपका अपना ऑफिसर लिख के दे रहा है ना, प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन आपको खत लिख रहा है, कॉपी आपको मार्क कर रहा है, तो उसको आप देख लेते हैं। तो वो सुप्रीम कोर्ट का जो ओरिजिनल ऑर्डर है हमारा, जिसकी कंटेम्प्ट में ये आया है, उसमें यही बात है कि लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात की जा रही है। उसके बाद इन्होंने विद इम्प्यूनिटी उठाया है और फ्री था सर, कोई कंट्रोल नहीं था। क्या कह रहे हैं जो आपने सर आर्गूमेंट्स में उस दिन जो 23 को जनाब ने भेजा था, व्हाट असिस्टेंस, क्या आप क्या बोलना चाहते हैं जनाब? ये सर स्पेशल सर ऐसे है कि पंजाब से आए हैं? ये सर पंजाब से आए हैं? नहीं स्पेशल सेक्रेटरी। सर हमने ये इंश्योर किया है उस दिन जब ये लास्ट डेट थी नॉमिनेशन की इलेक्शन कमीशन में। मेरा सिर्फ इतना सवाल है कि आपका अपना सूबाई इलेक्शन कमीशन एक खत आपको लिख रहा है, कॉपी आपको मार्क कर रहा है, चीफ सेक्रेटरी को उसने एड्रेस किया है, आईजी को किया है, तो उसके बारे में आपको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है आप। सर हमने इंश्योर किया है कि तमाम नॉमिनेशन
पेपर फाइल इंश्योर करने के अलावा आपने कौन कुछ ये इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी कहा स्पेशल सेक्रेटरी तो आपको देखना चाहिए कि जब आपका अपना ऑफिस ही इंटरनल आपकी वो है ना वो तो सर उसके बाद स्क्रूटनी हुई है, उसके बाद नॉमिनेशन पेपर्स दी, वहां पुलिस ही पुलिस थी सर। इसमें लिखें Learned counsel for the petitioner. नहीं ये 47 तो खत्म हो गई है। अच्छा ये है 47 नहीं है सर, वो नहीं ये ओरिजिनल 40 है ये, इसमें 40 है सर, वी आर हियरिंग 40। इसमें लिखिए क्रिमिनल ओरिजिनल पिटिशन नंबर 40 of 2023. Constitution petition number 47/2023 was disposed of by order dated, इसमें लिख दीजिए learned counsel for the petitioner submits, was disposed of by order dated 22nd December 2023. And it is alleged that the order has not been complied with. In this regard, reference is made to a letter dated 24 December 2023 of the Provincial Election Commissioner of Punjab, addressed to the इलेक्शन कमीशन को हमने Chief Secretary and Inspector General of Police, उसमें चेंज Punjab, Government of Punjab, full stop. चीफ सेक्रेटरी पंजाब The Election Commission of Pakistan, the representative of the Election Commission of Pakistan. Next paragraph लिख दें. The representative of the Election Commission of Pakistan state that they are doing everything to ensure free and fair elections in the country and have submitted compliance report dated 26 December 2002 and have submitted a comprehensive compliance report, capital C, capital R, dated 26 December 2023 in this court, comprising of 161 pages, stating that requisite instructions have been issued. Full stop. We inquired from learned counsel as to state the precise allegations that the petitioner has, and were told, and learned counsel referred to the letter of the Provincial Election Commissioner Punjab and stated that the Chief Secretary and Inspector General of Police, Government of Punjab, have disregarded the instructions of the disregarded the instructions कहेंगे इसको disregarded the क्या कहेंगे इसको instructions कहेंगे डायरेक्शंस हैं directions the directions of the Provincial Election Commissioner Punjab. So under the circumstances, that notice be issued, that in the first instance notice be issued to the Chief Secretary and Inspector General of Police, Government of Punjab, and Advocate General Punjab to submit
क्या कहेंगे, concise statement to submit reply, report to submit report as to submit report with regard to whether the directions of the said directions have been complied with, and if not, why the same have not been complied with. ठीक है. सर एक और चीज अर्ज थी कि एमपीओ के इन्होंने कोई 550 के करीब एमपीओ के ऑर्डर्स इशू करके हमें वो डिटेंशंस भी इन्होंने की. अगेन एमपीओ का इससे क्या कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग से क्या ताल्लुक है? Goza Saab, and we are faced, we have the benefit of senior counsel. ठीक है. Now it doesn't look nice that we have to keep reminding you. अब आप ही लोग हम पे कल उंगलियां उठाएंगे कि जी 204 में आपने ये कैसे कर दिया, तो वो कैसे कर दिया. हमने इलेक्शन कमीशन को जहां तक हम दरखास्त दी है, 27 को दरखास्त दी. भैया आप आपको कौन, हम आपको कह रहे हैं दे इनको, बाकी अदालतें भी खुली हैं. अब टेक्निकली स्पीकिंग ये जो मैटर था ना, टेक्निकली स्पीकिंग ये मैटर था हाई कोर्ट ऑफ लाहौर का, मगर फिर भी हमने आपके लिए एक्स्ट्रा, वी आर गोइंग द एक्स्ट्रा माइल टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. सो लेट्स नॉट जस्ट मेक जनरल एलिगेशन. जहां आपने कोई स्पेसिफिक बात की हम पूछते हैं. अब वो पंजाब, अब वो सिंध में गया और बलूचिस्तान में आपका एलिगेशन पंजाब पे हमें समझ आई फाइनली कि भाई ये आपका मुख्तसर एलिगेशन है. तो जहां तक जेन्युइन बात है हम करेंगे, मगर एक ये ना कहेंगे दुनिया आपके खिलाफ हो गई है. डोंट बी हैव दैट फ्रेम ऑफ माइंड, हैव अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड. 1960 का एमपीओ जी, ये आप ऐसी जो स्टेटमेंट्स देते हैं ना कि आज तक आप पाकिस्तान लोग खत्म नहीं करते ना, जब आपकी गवर्नमेंट्स होती है आप खत्म नहीं करते हो, रिपील कर दें उसको. Do you know under the conditions that the elections were fought when Ziaulak was there? You should know better. I know. You know. Yes. खत्म कर दिया करें अब जब भी. Do you know the elections when Mohammad Khan Junejo became Prime Minister? Do you remember those? वो तो So they were क्या हुआ था, बड़ी मुश्किल से भाई इलेक्शंस. तो don't just say that the worst election. लिस्ट बना के रखिए, जब गवर्नमेंट आए ना सारे ऐसे लॉस खत्म कर दीजिए, सब अनकॉन्स्टिट्यूशनल. वरना तो वो शेरवानी सिलवाने चले गए थे. हाँ, अच्छा. इस कोर्ट के इलेक्शंस करवाए. Anything else or you happy? अगर जब हम सवाल पूछा करें नाराज ना हुआ करें, बस इतनी रिक्वेस्ट है आपसे. हाँ? नहीं ब्रेक तो कल नहीं नेक्स्ट. हाँ, इसके कब रखें? कल के लिए रख लें, परसों के लिए. वो रिपोर्ट कल हमारा वो लार्जर बेंच है, वो फिर डिस्टर्ब हो जाएगा. मंडे को कर लेते हैं, क्योंकि फ्राइडे को हमने वो गजाली साहब बेचारे पास्ड अवे, सो वी होल्डिंग अ फुल कोर्ट ऑन दैट. मंडे इज ऑलराइट, बिकॉज उनको वक्त कल रखेंगे, वो टाइम ही ले लेंगे, फिर यही होगा. ठीक है, मंडे को कर दें. ठीक है सर. 8 जनवरी. ठीक है. आर यू अवेलेबल? I'll be available. ठीक है, 8 सही है. अच्छा, मैं आ जाऊंगा. कोई बात नहीं, सुबह देखेंगे यार, 2 मिनट का काम है. चलो ठीक है. 5 मिनट का ब्रेक लेंगे. Thank you, sir. अच्छा, हम अब कौन सा केस है अगला? बस खाली ये बट्टू. अच्छा, मिसिंग पर्सन का केस है. Let us refresh ourselves.